An episode that focuses on the importance of washing your hands may seem a little too obvious, but in next half hour when we bring you reports of wide-scale disease and even death that could have been prevented with just this basic act. That's among our country's most damning statistics, that every day we should lose almost 200 of our children under 5 due to diarrhea, simply because of poor sanitation standards. What makes this even more criminal is the fact that many of these lives could have been saved with as basic a function as proper washing of hands. Take Bhopal for instance, where diarrhea is rampant. Guria is an acutely malnourished child. Doctors say if her weight falls by even half a kilo, her life will be in serious danger. The family is poor, daily wage laborers who work hard to be able to feed themselves and their child. But poor nutrition is not the only cause for Guria's malnourished state. The local Anganwadi is able to supplement her food. What it is not able to do is to prevent her falling sick. Filthy surroundings, open sewage systems, a lack of running water causes rampant sickness in children in this area. In just 1 month, Guria has had 5 episodes of acute diarrhea. गांव में गंदगियां रहती हैं, मच्छर रहते हैं, मक्खियां रहती हैं, इसलिए बच्चे कुपोषित होते हैं और धूल मिट्टी में खेलते हैं, इसलिए होते हैं कुपोषित। फिर हम इलाज कराने के लिए अस्पताल आती है तो एनआरसी में आए तो पहले इस बच्चे को भी मैं बहुत कमजोर लाई थी। फिर इसे यहाँ से बहुत कुछ सुविधा मिली। इसके लिए दस्त थी, उल्टी थी, उसकी दस्त उल्टी बंद हुए और उसे खाने के पीने के उसके लिए हम भी तरीका सीख गए तो हमने भी उनके लिए फिर वही खिलाया घर में तो वो सही हो गई। फिर सही होने के बाद में फिर वो मट्टी में कचरा में और शौचालय वगैरह है नहीं है गांव में, किसी के घर है या नहीं है तो हमारे घर में तो नहीं है, इसीलिए वो फिर से कुपोषित हो गई। इसलिए यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा मिलती है और सब कुछ वो उपलब्ध होती है। ये हम सब सुविधाएं सीखते हैं यहाँ से। Guria's family is worried about her health. So are the doctors. The healthcare impact of inadequate sanitation was more than 4,75,000 crores. 3 children under the age of 5 die every minute in India. The commonest culprits are diarrheal diseases and respiratory infections. As many as 40% of diarrheal episodes and 30% of respiratory infections can be prevented just by washing hands. Wash hands, save lives. The UN Global Handwashing Day was evolved to emphasize the importance of this most basic act. And we at Dettol, NDTV, Banega, Swachh India have worked in the past 1 year, worked hard on the ground to carry this message to our cities, our towns and to the remotest part of this country. Through the Swachh Express, which travelled across the country, as the bus travelled, our reporters chronicle the state of hygiene in many regions of this country, while NGO volunteers worked with communities to connect more directly. We bring you excerpts of that incredible journey. Open defecation as a norm is most problematic in urban areas, where there are few open spaces or fields, where people live cheek to jowl, where the risk of contamination is very high. Here the message is simple.
While wider infrastructural changes are needed, people can help themselves with a few basic steps suggested by the Swachh Express volunteers. कमर तक, यहाँ तक, गड्ढा गोल खोदना है, गड्ढे के अंदर जालीदार चुनाई करना है, 7 से 10 साल तक आराम से चलेगा। Hand washing too has a correct technique. साबुन लेके खाली ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है। ये जो गू के कीटाणु होते हैं ना, आपके यहाँ पे घर्षण सही तरीके से नहीं होगा, तब तक वो जीवाणु मरते नहीं है। Just 30 kilometers out of the state capital Jaipur, some shocking statistics. In Vatika village, a small hamlet where there is not a single toilet. The worst sufferers, women, forced to go out in the open. बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारे। जैसे कोई आ गया तो खड़े हो जाते हैं, फिर वो जाएगा, निकलेगा आगे तो फिर बैठेंगे तो 2 बार 3 बार तो उठना ही पड़ता है हमारे को। Finally, a reluctant acceptance from this backward nomadic community of Bilwa hamlet that they will build toilets as the Sarpanch steps forward with financial help. सामान मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मजदूरी खुद को करनी है। पैसा जब भी आपको मिल जाए सरकार का, आप मुझे वापस लौटा देना, तब तक पैसा मैं टेलेगा। ठीक साहब, ठीक साहब। मजदूरी का पैसा आपके खाते में भेज देंगे। In Mathura, western Uttar Pradesh, Krishna's territory, every inch of the land is part of a pilgrimage, with its own stories and rituals. Sadly, every inch also covered with dirt and filth. रात में लेटरिन लग जाती है, दस्त हो जाते हैं, तो इसलिए बाहर जाते हैं, इसलिए परेशानी है। डर लगता है रात को जाने वक्त? हाँ, खुले में जाना तो मजबूरी में जाना पड़ता है, और फिर कोई समस्या हुए तो काय को ले जाएंगे, जो समस्या ना तो जाना पड़ेगा। Further 68 kilometers away, Satrapur village in Aligarh, custom dictates that many women stay in parda, but their wider dignity compromised at every step. शर्म लगती है, कोई मर्द आदमी निकल जाए तो फिर ऐसे उठना पड़ता है, और बेटी को रात में लगती है तो कहती है अम्मी चला हमारे साथ, 10 बजे 11 बजे तो फिर ऐसे उसे करान ले जाते। Stay tuned. We have stories from across the world coming up after this short break. Don't go anywhere. 14 नवंबर भारत बाल दिवस मनाता है। मेरी गुजारिश ये है कि हर प्रिंसिपल अपने स्कूल में उस दिन स्वच्छता की पाठशाला बैठे, बच्चों को सिखाएं हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और जो कुछ भी आपका कार्यक्रम होता है उसके बारे में आप हमें लिखें। ये देखिए, इस पे भेजिए, हम उसका आदर सत्कार करेंगे।